राहुल यादव का आपने जर्नी आई एम श्योर वेरी क्लोजली देखी है. Mhm. ही ऑल्सो आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई एंड Mhm. पुणे एरिया. So what was his journey? What were the golden days, and then what was the fall? If you are following that story. So yeah, I have seen his journey very closely. The IIT Bombay dropout problem ये थी कि उन लोगों को एक घर चाहिए था just अच्छा. outside Powai, and that's how housing started. And Which year was this? somewhere around 2008-9 की बात रहेगी या 10 की Okay. रहेगी. I don't know the specific year. And वहां से कहानी शुरू होती है. अच्छा. Rahul was a blue-eyed boy of the Indian real estate ecosystem when it comes to the digital transformation. मतलब 99 acres magic bricks दोनों की हिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड सडनली हाउसिंग कम इनटू द पिक्चर. हाउसिंग ने चेंज कर दिया था उस टाइम में कैसे प्रॉपर्टी लिस्टिंग शुड वर्क. एंड बोथ ऑफ द अदर गाइस adopted it. And when the funds came, he always invested on doing marketing. मतलब he was so famous that कौन entrepreneur होता है जिसने अपनी सारी इक्विटी एम्प्लॉयज में बांट दी. That was the news. And after that, when he joined Anarock, we interacted for some time. And then after Anarock, he moved out and started 4B Networks. And then we know the story today that when InfoEdge invested in 4B Network, today it's at forensic audit. Yeah. But Rahul Yadav has gone from the highs and lows of his own entrepreneurial journey. But yes, आज की डेट पे आप अगर देखेंगे there are so many positive and negative news, more negative and then positive because of the current fiasco which happened couple of years back. But it's quite repetitive because housing में भी ये story थी कि when they got funded almost 100 crores they invested in marketing itself, which the investors did not like it. And because of that challenges, because investors के साथ उनके board of advisors आ रहे थे, they're advising something else, and then it was not working. So he is. I think Anarock में भी फिर same कुछ ऐसी story हुई थी, and then 4B में भी again repeat हुआ है ये third time. 4B is something जहाँ पर 150 odd crores की investment he has collected from the famous Sanjay Bikhchandani's team. मतलब the guys who have invested in Zomato. And stories तो ये कहती है कि during one of the family functions when Rahul Yadav and Mr. Bikhchandani met, they discussed about 4B network and broker network evolved from there. But कल के डेट पे आपको एक financial discipline भी चाहिए एक entrepreneur में. Agree. And more importantly, investors' money is not to burn. Today आप अगर देखेंगे unicorns की जब बात होती है, people were focusing to become unicorn. Today investors want profit. प्रॉफिट कहाँ पर है आपकी. आप अगर आज की डेट पे ग्रोथ बात कर रहे हैं, कब तक बर्न करेंगे. एंड वो बर्न कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए. ये एक फंडामेंटल शिफ्ट आया आई थिंक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में. 100%. दैट इज वन मेजर रीजन. आप अगर देखेंगे इंडिया रीच टू 100 यूनिकॉर्न्स इन जस्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. स्पेशली 18 से लेके 22 तक यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ यूनिकॉर्न कमिंग एवरी वीक एंड मंथ, एंड सडनली देयर इज अ डिप. क्योंकि पैसे का फ्लो आ रहा था ना, फॉरेन एफडीआई आ रहा था और स्टार्टअप्स में फॉरेन का पैसा आ रहा था. तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप ग्रोथ देखते हैं कि पैसा कैसा मेरा डबल. स्पेशली इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में स्टार्टअप्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, तो लोग ये सोचते हैं कैसे मैं अपना पैसा बना के आगे निकल के जाऊंगा. अब उस प्रोसेस पे व्हाट हैपेंस इज लाइक इट्स लाइक लैंड पार्सल, राइट. आज मेरे पास एक लैंड पार्सल है, मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ एक बेनिफिट्स या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता हूँ, बेच के मैं निकलना चाहता हूँ. And that goes from a small investor to a large investor. I agree. During this buying and selling process, it has gone haywire. Tell us a little bit more about your product. आपका प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट के यूजर्स किस तरह के हैं और वो किसको वैल्यू ऐड कर रहा है इन द प्रॉपर्टी सेगमेंट. Cool. So जैसे मैंने बताया शुरू किया था कि there are 4 B's of the ecosystem. You have a builder, you have a broker, you have a banker, and then you have a buyer. ये चारों आज की डेट पे रिलेटा के लिए कस्टमर है. ओह अच्छा. बट टुडे वी earn our revenue especially from builders, mandate players, and maybe association with the banks. Okay. So how fundamentally आज के डेट पे एक operating system build करने जा रहे हैं. But prior to that, let me put up where we come. So we are a customer experience platform. Okay. वहां से हमने जर्नी शुरू की थी. So what was the first customer experience? How you can create a visualization tool for someone to understand कि ये प्रोडक्ट में क्या है. Okay.
Now, irrespective of the digital ecosystem या physical ecosystem, जब मैं एक साइट विजिट करने जाता हूँ, एक सेल्स वाला बंदा मेरे सामने एक ब्रोशर खोलता है, मुझे एक वीडियो दिखाता है एंड वहां पर जर्नी खत्म हो जाती है, कॉस्ट प्रिंट आउट लेके आ जाएगा. बट आज की डेट पे जो मेरा बायर है, उसने फ्लिपकार्ट देखी है, उसने इंस्टाग्राम देखा हुआ है, उसने Amazon. सब चीज देखा हुआ है, और वहां पर वो एंगेज कर पा रहा है प्रोडक्ट के साथ. वो प्रोडक्ट एंगेजमेंट मिसिंग है. सो हमने जब वो पूरी जर्नी देखी, सो देयर आर टू मेजर चैलेंजेस. वन इज एक्सप्लोरेशन एंड एंगेजमेंट. Okay. कि आज के डेट पे मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. व्हाई दे आर टेकिंग 120 days टू क्लोज द सेल्स? I agree. So that is the first problem which we wanted to solve. कि how buyer can explore and engage the product when they go back home. And compare and take decision faster. That is one. More important, the second is when they took the decision. आज के डेट पे आप अगर देखेंगे ना, सेल्स हो गई ना, फिर उसके बाद बायर को, डेवलपर को चेस करना पड़ता है, भाई आगे का प्रोसेस क्या है, why are you taking so much of time? So deal through processing and closure is again pain for a buyer. Now, because of this two major reasons, customer experience is broken. Yeah. So at Relata, as I mentioned, we focus how lead can be a deal with a process. Oh, wow. And so we have 6 different verticals, starting from visualization. Then we have something which is focusing on lead management and engagement. We are talking about जो आपके साइट की सारी operations है, प्रोजेक्ट साइट की, how you can automate with a QR code. Wow. We are talking about behavioral analytics की ये buyer, आपके पास 1000 लीड है, उसमें से कौन से 10 लीड आपके घर खरीदना चाहते हैं. We are talking about the post-sales engagement. We have built a product called as Rhea, and Rhea talks about कि conversationally आप कैसे you can ask a question of the product and वहाँ पर आपको misinformation ना आ जाए. We have product for the brokers, CPE app. Excellent. Now, all of these are bits and pieces. So when my investors ask me, Samudra, आपके competitors कौन से हैं? So bits and pieces में मेरे बहुत सारे competitors हैं. But globally, when we saw, we are the only team who are doing an end-to-end enterprise sales tool, which engages from pre-lead till post-sales. So today we have this 6 engagement about Relata. And I'm very happy that the kind of team we have got in last 4 years, 5 years, we have built. Just to give you an idea, most of my technology team members are from IIT. So barring me, my other co-founders are from IIT Guwahati. So उनको technology काफी अच्छा समझ में आता है. And we were very lucky because the ecosystem gave us the problem statement. Like we have a product called as Booking Engine. And it started with one of the largest developers they were looking forward to solve this problem for 5 years. They could not. They reached us. And then we had some prototype that time. We told them हम ये build कर सकते हैं. आज वो हमारा एक काफी major product बन चुका है, जहाँ पर आप eventually selecting the inventory and you can buy and generate agreement from it. Excellent. So your product is gonna change the way the buyer in India buys a property, and then it makes a complete end-to-end solution for everyone involved. True that. So when I pitch my product in Dubai, they need the solution. In India, we are seeing a huge adaptability. Like last quarter, Q1 to Q2, our growth was around 143%. Oh, wow. And today we see it growing faster. So जैसे अभी हम एक One Prop Expo लेके आ रहे हैं. Now we want to reach to the masses, the mid of the pyramid. आप category A+ developer ले लीजिए, from DLF, MSC, Hiranandani's to everybody uses our product. Both the banks, ICICI, HDFC are part of the ecosystem. But in the whole journey today, we are entering the mid of the pyramid. So we are coming with one of the event where we are focusing on 1,000+ projects pan India. Wow. And this is starting in 1st of February. This is a virtual event. This is a virtual exhibition, one of its kind, where you can see the properties. We're expecting and anticipating close to 3-4 lakhs of visitors. Wow. Across the globe. It's going to run for 2 months. And during this, I'm solving problem for all the 4 Bs. Yeah. For a buyer, you have inventory, you have offers, you have supplies. For the brokers, we are creating an engagement ecosystem where you can connect in this exhibition. For the bankers, they are coming up with different offers. For home loans, we are talking about developers that, hey, you come with just a very small fee. 1/20th of the traditional exhibition के fees में आप 3 महीना का आप exhibition run करेंगे. Now that's one way जहाँ पर हमने हमारा GTM change किया, such that we get penetration. And today, the focus is that जो ये developer है mid-tier segment के, कैसे उनको टेक्नोलॉजी पहुंच पाए. बिकॉज वी नो जो प्रोडक्ट पे हमने अभी बिल्ड किया है एंड द प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व फॉर द लार्जर प्लेयर्स, से हीरानंदानी,
वी हैव एन आइडिया कि आज जो बंदा एक 200-500 करोड़ का इन्वेंट्री बेच रहा है उसको आज की डेट पे ये प्रॉब्लम नहीं मालूम है. Yeah. वो जब तक 5 साल के आगे का जर्नी तक आएंगे तब तक Relata as a product would solve a lot of problems. So our focus is that you might be anyone in the ecosystem who is selling the product, but you being in one individual can complete the whole journey.